video we are going to discuss about Monera kingdom and the gram positive and gram negative bacteria. First of all, we have to understand what is gram staining. So firstly, we are going to discuss about the gram staining. Gram staining was discovered by a scientist whose name is Hans Christian क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन्होंने इसमें क्या बताया. उन्होंने बेसिकली हेंस क्रिश्चियन की अगर हम बात करते हैं तो ही हैज टोल्ड अस कि इन केस ऑफ बैक्टीरियाज, इन केस ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज, देयर आर हैविंग वेरिएशन फाउंड इन केस ऑफ इन देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन. क्योंकि ये बैक्टीरियाज में मोनरा किंगडम की खासियत है कि दे हैव सेल वॉल, और हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है कि कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो दे आर नॉन सेलुलोजिक, मतलब कि वहाँ पे सेलुलोज ना मिल करके कोई और तरीके का केमिकल पाया जाता है. तो अब हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो दिस ग्राम स्टेनिंग इट इज ऑफ टू टाइप. ये दो तरीके की है. पहली है ग्राम पॉजिटिव, जिसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड दूसरी है ग्राम निगेटिव. इफ यू टॉक अबाउट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पहले हम लोग सर्टेनली डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे. If you talk about the gram-positive bacteria, this is a bacterial cell. So it is having a cell wall layer, and this cell wall is made up of peptidoglycan, which is rich in teichoic acid. Teichoic acid. Remember this name of teichoic acid. When we talk about the gram-negative bacteria, there also this is plasma membrane and this is the cell wall we have. But the thickness of cell wall is less in case of gram-negative bacteria. So it is also cell wall we have. It is also made up of peptidoglycan. But this is without teichoic acid. Without teichoic acid. And one more thing, in case of gram-negative bacteria, if we talk about, then these certain bacteria are having a special layer of lipoprotein. They have a special layer of lipoprotein. So this is lipoprotein. So certainly you will understand this thing. In case of gram-positive bacteria, cell wall is made up of peptidoglycan, which is rich in teichoic acid. In case of gram-negative bacteria, cell wall is present and this is made up of peptidoglycan also, but it is not having a teichoic acid. But in place of this cell wall की अगर हम thickness की बात करें, it will be more in case of gram-positive bacteria, and it will be becoming lesser in case of gram-negative bacteria. And if we talk about the lipoprotein, they are the extra layer which is present outside the cell wall as a protective layer. So these are the description about the gram-positive and the gram-negative bacteria. Now we will discuss about the steps for staining, because before starting this thing we have to understand the steps for staining. Steps for staining are as follows. First of all,
we are going to heat fix bacteria on a slide. Heat fix bacteria on a slide. इफ यू टॉक अबाउट दिस हीट फिक्स बैक्टीरिया, दैट मीन्स कि हम बैक्टीरिया को लेकर के एक स्लाइड में गर्म करके उसे उसमें फिक्स करने की कोशिश करेंगे. द सेकेंड स्टेप विल बी ट्रीट विथ क्रिस्टल वॉयलेट. About 30 seconds to 1 minute. This is the step which we have to follow. Treat it with crystal violet 30 seconds. हम लोग दो स्लाइड्स पे ये काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए. So treat with crystal violet 30 seconds to 1 minute. And then the third is rinse it off with water. जो भी एक्सेसिव वहाँ पे कलर प्रेजेंट है, अभी क्रिस्टल वॉयलेट इज ए काइंड ऑफ स्टेनिंग विच वी आर यूजिंग हेयर. पर्पल कलर की ये बेसिकली रहेगी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिंस इट ऑफ. हम उसे पानी दे करके बहुत अच्छे से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि एक्सेसिव जो भी स्टेन वहाँ पे प्रेजेंट है वो सब रिमूव हो जाए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, पुट दिस स्लाइड इनटू iodine solution. Put this slide into iodine solution. अब ये दोनों ही स्लाइड्स को हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के अंदर में डालेंगे. डालने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए. दैट इज अबाउट 30 seconds to 1 minute. Leave it in that. In this case, जब आप इसको दोनों स्लाइड्स को वहां पे छोड़ोगे, you will observe this thing कि दोनों ही स्लाइड्स पर्पल कलर की हो चुकी है. दैट बोथ द स्लाइड्स विल बिकम ऑफ पर्पल कलर. After this, we have to rinse it off. Now we have to remove the excessive purple color also. अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी है कि इसको वॉश करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख के डिसाइड कर लेते हैं. नाउ वी विल वॉश बोथ स्लाइड विथ अल्कोहल और एसीटोन. अल्कोहल और एसीटोन दोनों केमिकल में से जो अवेलेबल हो आप उससे उसको वॉश कर दीजिए. एंड देन यू विल फाइंड आउट, आपको वहां पे ऑब्जर्व होगा दैट देयर इज ए फ्यू बैक्टीरिया. ये एक स्लाइड ऐसी होगी जो कि पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रही होगी. मेरे पास पर्पल कलर नहीं है, मैं ब्लू कलर आपको स्टेन करके दिखा रही हूँ. तो देयर आर फ्यू बैक्टीरिया विच इज इन ब्लू कलर. इसको हम पर्पल बैक्टीरिया के तौर पे ले रहे हैं. एंड दीज बैक्टीरियाज आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो कि जिनका पर्पल कलर डिसअपियर कर जाएगा एंड दे लॉस्ट देयर स्टेन. दे विल लॉस्ट देयर स्टेन. Now again we are going to treat this bacteria with safranin. Safranin is another stain by which these bacteria will turn into red or pink color. Turn into pink color or it will be turned into red color. And these bacteria are known as your gram negative बैक्टीरिया. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कैसे यहाँ ग्राम पॉजिटिव आया और ऐसे उनको ग्राम नेगेटिव बोला गया. बिकॉज आप यहाँ देखिए स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पे सेल वॉल के बाहर कोई स्पेसिफिक लेयर नहीं है. तो जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन के साथ में इसका रिएक्शन कराया तो पेप्टिडोग्लाइकेन इज गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट कलर और उसने उस कलर को रिटेन कर लिया अपने पास में. लेकिन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन, दैट पर्टिकुलर स्टेन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन इज नॉट रीच अप टू द सेल वॉल. अगर वो सेल वॉल तक पहुंचता
तो वो भी आपको पर्पल कलर प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन इज मेड अप ऑफ सच काइंड ऑफ स्टार्ची कंटेंट, जिसकी वजह से वो आपको पर्पल कलर दे सकता था। लेकिन लिपोप्रोटीन की प्रोटेक्टिव लेयर वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो हमें वो स्पेसिफिक कलर पर्पल कलर प्रोवाइड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उन्हें हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह रहे हैं। और जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया हमें ऑब्टेन होंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनमें से ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए क्या है? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल बी मोर हार्मफुल फॉर अस। व्हाई? बिकॉज इनमें आप देखो, जब भी कोई अगर हम किसी मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट करेंगे, किसी एंटीबायोटिक को भी ट्रीट कराएंगे, तो लिपोप्रोटीन की लेयर की वजह से इन तक सेल वॉल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकती है किसी की बॉडी के अंदर में। और इफ यू टॉक अबाउट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो दे आर नॉट गोइंग टू हार्म इन दैट वे। अगर एग्जाम्पल याद करना हो तो इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ विब्रियो कॉलेरा। यू कैन लर्न द एग्जाम्पल ऑफ विब्रियो कॉलेरा। So these are the few things about the gram positive and gram bacteria. I hope कि आपको ये चीज समझ में आई होगी. Now we will move on the next topic of modes of respiration. As we know, this respiration process is essential for every living organism for getting energy. So before starting this particular topic, we will understand this thing that respiration is of two types. The one is your aerobic respiration and the another one is your anaerobic respiration. Aerobic, everyone is understanding that there will be completed in presence of oxygen, and anaerobic respiration is that which is not going to require the oxygen, or it will be completed in absence of oxygen also. So in case of Molera kingdom, if we talk about, so there are certain bacteria which are completing their mode of respiration in presence of oxygen also, and there are certain members which are completing their respiration in absence of oxygen. But as we know, this Molera kingdom is prokaryotic cell. It is a prokaryotic. So firstly we will understand what are the different steps which are involved in respiration process and where it is going to be taken place. As we know, this is of two types. Aerobic and anaerobic. If we talk about the aerobic respiration, which we know in general case of eukaryotic, क्या क्या चीजें होती हैं? पहली बात, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो दैट वी आर नॉट राइटिंग. देयर विल बी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, in which glucose is going down to break into 2-pyruvic acid. Then there is a Krebs cycle. There is a release of carbon dioxide and energy. Then there is a transportation of this energy by electron transport. System. Oxidative phosphorylation, formation of ATP. Oxidative phosphorylation. Generally, in case of all the eukaryotes, if we talk about in all the eukaryotes, these all four processes are taking place, and this will be taking place in respective places also. Like if we talk about the glycolysis, so glycolysis is going to take place in case of cytoplasm, because we are comparing eukaryote
with prokaryotes. So we will write down the comments also. So glycolysis, if in case of eukaryotes it is taking place in cytoplasm, in case of prokaryotes it will also take place in cytoplasm. Why? Because if we see the prokaryotic cell, then it will be understandable that cytoplasm is present. So it will also take place in cytoplasm. Krebs cycle, this is going to take place inside the matrix of mitochondria. So when we talk about the Krebs cycle, in this Krebs cycle, this is going to take place in matrix of mitochondria. As we know, in case of prokaryotes, they don't have cell organelles like mitochondria. Then this step will be skipped, or we can say that this will be completed in case of cytoplasm only. In cytoplasm, there will be breakdown of pyruvic acid, and then it is going to be released the energy. But now the next process, which is electron transport system, by which the electrons are going to be transported from in case of eukaryotic cells, this will be done in case of mitochondrial membrane. Mitochondrial membrane. In case of prokaryotic, if we talk about these prokaryotic cells are having actually a special structure, which is enfolding of this plasma membrane. It is also known as the mesosomes. Mesosomes play important role in electron transport system, basically because they are usually connected with the genetic material, which is in the form of circular shape. So by this only they are transporting the electrons from one medium to another medium. So there will be presence of mesosomes. If you talk about the oxidative phosphorylation, this is the process of formation of ATP. This will be done in plasma membrane, and here also it is plasma membrane. दोनों ही जगह पे this will be taking place in the membrane of thylakoid in case of plants, if we talk about, but in case of these certain bacteria, this will be completed by the help of plasma membrane. So this will be the membrane of thylakoid. Oxidative phosphorylation, process of making ATP. So this is all about the aerobic respiration, which we have discussed till now. And if we talk about the anaerobic respiration, this will be also of 2-3 type basically. तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. So aerobic will be of 3 type. First of all, in absence of oxygen, usually they are taking carbohydrate as a food substance, and then they start breaking it. And that process is known as fermentation. And in the fermentation process, they are going to form C2H5OH, which is ethyl alcohol, carbon dioxide, and there is a release of energy, which everyone is knowing in case of certain bacteria. But if they take protein as a source of energy, then that process is known as putrefaction. Then it is known as your putrefaction. In this process, energy is going to be released, and if suddenly they are using any of the decaying material as a food, then certainly it is going to be decomposed, and then energy is going to be released. So they have two modes. The one is aerobic mode. If they are taking oxygen, then they are completing and they are getting energy by the glycolysis, Krebs cycle, electron transport, and oxidative phosphorylation. If they are not getting oxygen, then by the breakdown of glucose, carbohydrate, by protein, or by certain decaying substances, they are going to get energy. On the basis of their mode of nutrition, we can classify them into certain categories.
Now we will discuss that categories. The first one is obligate aerobes. जब कभी भी obligate word use होगा, that means this condition is necessary, that means this has to be present over there. So if it is written obligate aerobics, that means these are the certain groups of bacteria which are wanted a compulsory situation of oxygen, so they are known as obligate oxygen. So oxygen is must in this case. This is the first category. Then second is obligate anaerobic. Certainly it is like oxygen is not required. Next is facultative aerobics. Facultative means something which is optional and they can survive on that also. Like facultative oxygen, they can survive on even on oxygen, even in presence of oxygen. But certainly they are anaerobic, but if they will get oxygen, they can survive on it. So facultative aerobic. In that same way, facultative anaerobic, they are those which are usually present in presence of or surviving in presence of oxygen, but if it is oxygen is not present, then also they can survive. So even in absence of oxygen, they can also survive. So this is types of or modes of respiration which we have understood.